Yes, all of you. I hope all of you are doing good. So once again, welcome to the class. And in today's class, we are going to discuss about the structure of cell. Yeah, इसके पहले की classes में on this chapter, that is fundamental unit of life, we had started with about knowing about the cells. हमने cells के बारे में पढ़ा है. सेल का शेप कैसा रहेगा, सेल का साइज क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. As well as students, we have also seen how the cell was discovered, isn't it? What is the role of the microscope that plays in the discovery of cell? All these things we have already discussed and in our previous classes. तो आज की क्लास से हम क्या शुरू करने वाले हैं? We are going to discuss about the cell. या स्पेसिफिकली द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल. सेल का स्ट्रक्चर क्या क्या है, कैसे है, ये सेल में क्या रहता है, व्हाट विल बी द डिफरेंट ऑर्गेनेलीज विच आर प्रेजेंट इन अ सेल. सो ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल्स फ्रॉम टुडे क्लास. सो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि हम बात करते हैं सेल स्ट्रक्चर, या तो स्ट्रक्चर ऑफ द सेल बोल दिया, दैट मीन्स आपका सेल का सेल में क्या क्या चीज़ रहेगी, व्हाट इज प्रेजेंट इन द सेल एंड ऑल दैट थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो हियर विल जस्ट मिनट, आई टेक आउट द पेन. या so we know that the different kinds of cell differ in their shape, size, functions, etc. हमने इसके पहले की क्लास में पढ़ा है कि सेल्स अलग अलग तरह के होते हैं, है ना. जो अलग अलग तरह के सेल होते हैं, दे हैव देयर स्पेसिफिक फंक्शन. उनके जो शेप रहता है, उनका साइज रहता है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो कौन सा फंक्शन करने वाले, उसके हिसाब से उनका शेप और साइज डिसाइडेड रहेगा, इजंट इट. एक ही फंक्शन करने वाले सारे सेल एक ही जैसे रहते हैं, isn't it? So different kinds of cells differ in their size, shape, functions, but all the cells have some basic structural plans. कोई स्पेरिकल है, कोई सेल स्पिंडल शेप्ड है, कोई सेल सपोज वी कैन से सर्कुलर है ना. इट विल डिपेंड, बट उनका जो बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान्स रहेगा सारे सेल का एक ही जैसा रहेगा. यस, उसमें तीन मेन फंक्शनल पार्ट्स रहेंगे. वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, देन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. ये तीनों चीज़ तो हर सेल में रहेगी ही. इसके अलावा हम बोल सकते हैं यदि प्लांट सेल है तो उसमें एक और एडिशनल आ जाएगा, दैट इज द सेल वॉल. ठीक है. सो दीज आर द मेजर फंक्शनल पार्ट्स ऑफ द सेल. इसके बाद में आप बोलोगे कि मैम देन व्हाट इज द माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो दे आर कॉल्ड एज एन ऑर्गेनेलीज, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर, जब साइटोप्लाज्म रहता है सेल में, उसमें विद इन दैट दिस ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट. डोंट वरी, हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं. यस, तो अभी के लिए आपको ध्यान में रखना है कि सेल में तीन मेजर फंक्शनल पार्ट्स रहते हैं. यस, इट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. एंड इफ इट इज अ प्लांट सेल, एक और ऐड कर लोगे आप, दैट इज द सेल वॉल. सो वी विल फर्स्ट सी अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Plasma membrane, students, also called as I told you, cell membrane. We also called it as a cell membrane. This is the outermost part. Yes, या फिर हम बोल सकते हैं आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल जो रहेगा, यानी सेल का, यदि ये सेल है आपका, तो ये जो बाहर का पार्ट है, ये जो बाउंड्री है, ये कुछ नहीं तो दिस विल बी द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Got it, students? So outermost covering of the cell that separates the content of the cell. सेल के अंदर जो जो कंटेंट है वो सारे चीज़ों को सेपरेट करेगा, किससे, फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल. यानी वो एक तरह की बाउंड्री है, दीवार है, isn't it? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, इट इज अ लिविंग पार्ट ऑफ अ सेल. रिमेंबर दिस थिंग, okay? It is a living, thin, elastic and selectively permeable membrane. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? इट इज अ लिविंग, थिन, इलास्टिक एंड सिलेक्टिवली परमिएबल. नाउ व्हाट इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, किसी को पता है?
परमिएबल हमको पता है कि जो परमिट करेगा, अलाउ करेगा सिलेक्टिवली, दैट मीन्स कुछ सिलेक्टिव चीज़ों को ही अलाउ करेगा, ऐसी मेम्ब्रेन है. दैट मीन्स व्हाट इज अगेन सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? दैट मीन्स इट अलाउज द एंट्री and exit of only certain substances, yes, in and out of the cell. जैसे हम बोल सकते हैं कि कुछ जो छोटे सब्सटेंस रहते हैं, नॉन पोलर सब्सटेंस, फिर अनचार्ज्ड पोलर जो रहेंगे, वो सारों को वो अलाउड करेगा. लेकिन यदि हम आयंस की बात करेंगे तो आयंस कैन नॉट बी डायरेक्टली पास थ्रू दिस मेम्ब्रेन, इसीलिए वो कुछ ही चीज़ों को अलाउड करता है सेल के अंदर आने में और सेल से बाहर निकलने में, इसीलिए हम उसको बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. यस, so what do you mean by the selectively permeable membrane? We can write that it allows entry and exit of only certain substances in and out of the cell. Got it students? यहाँ तक समझ में आया? Now substance going in, कौन कौन से substance ऐसे हैं जो अंदर जाते हैं? There are certain substances like सेल के अंदर सेल को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत रहेगी, वो सारे substance अंदर जाएंगे. जैसे कि यदि मैं गैस बोलूँगी तो ऑक्सीजन गैस इज रिक्वायर्ड, है ना. रॉ मटेरियल्स लाइक वाटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, फूड, या देन सॉल्ट्स, सम सॉर्ट्स ऑफ सॉल्ट्स, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है सेल को, इसीलिए वो सेल के अंदर जाएंगे. सेल के बाहर क्या निकल सकता है? फिर से गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, है ना. देन यदि जो सेल में मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो सारी चीज़ें, देन जो वेस्ट डेवलप हो रहा है, तो वेस्ट विल ऑल्सो कम आउट ऑफ द सेल. कुछ प्रोटीन्स जो सीक्रेट हो रहे हैं, कुछ हॉर्मोन्स जो सीक्रेट हो रहे हैं, वो भी बाहर आ सकते हैं. Got it? So these will be the substances which can come out of the cells, and some substances that can go inside the cells. Vitamins, hormones, ये सारी चीज़ें सेल के अंदर भी जाएंगे. Got it students? और सेल के अंदर क्या रहेगा? Within the cell always the metabolic intermediates will remain within a cell. I hope this is clear. तो सेल के अंदर क्या रहेगा? मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स. यू कैन सी दिस फिगर, यू कैन सी ये आपका सेल मेम्ब्रेन है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. ओके, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट उसका, और ये है इनसाइड ऑफ अ सेल. So you can see here that the hydrophobic molecules and gases like carbon dioxide, oxygen, nitrogen, है ना, ये सारी चीज़ें easily सेल की मेम्ब्रेन को पास कर देंगे. So plasma membrane is permeable, selectively permeable for hydrophobic molecules as well as gases. उसी के साथ साथ small uncharged molecules, or we can say small uncharged polar molecules, isn't it? वो भी सेल में से मेम्ब्रेन से पास हो सकते हैं, बट कंपैरेटिव टू हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स ये थोड़ा कम हो गई. आप देखोगे एरो की साइज, ब्रॉडनेस और थिकनेस कम हो गई यहाँ पे, या बट दे कैन पास. लाइक यहाँ पर आप ले सकते हो वाटर, या देन NH3 है, ग्लिसरॉल है, ये सारी चीज़ें small uncharged polar molecules में आएंगी. Then if they are large molecules, but again यदि वो large molecule है और uncharged है, again uncharged है, polar है, तो भी they can pass, but not all. Some of them they can pass through the plasma membrane, जैसे कि glucose, sucrose, isn't it? They can pass from there. But yes, if it is a charged molecule like ions, है ना, आयंस और चार्ज मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे वो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन उनको पास नहीं होने देगी. So in that way we say that the plasma membrane is what? It is selectively permeable membrane. I hope this is clear. यहाँ तक समझ में आया? Got it students? Okay. Now if I talk about this
प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कि किस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना है, किस चीज़ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअली डबल लेयर है, ये देख सकते हो आप, एक और दो, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये एक और ये दो, या सो इट इज अ बायलेयर और डबल लेयर स्टूडेंट्स वी कैन से। किसका डबल लेयर है? इट इज हैविंग अ फॉस्फोलिपिड बायलेयर। ये एक लेयर है फॉस्फोलिपिड की और ये दूसरी लेयर है फॉस्फोलिपिड, सो वी से दैट इट इज देयर इज अ बायलेयर ऑफ द फॉस्फोलिपिड। सो दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन्स प्रोटीन्स, चार मेन चीज से बना है, एक रहेगा प्रोटीन्स, देन इट इज कार्बोहाइड्रेट, उसमें जनरली वी कैन टेक पॉलीसैकेराइड्स, yes, then cholesterol, and the last we can say phospholipids. लेकिन जो ये जो phospholipids है, phospholipid it is a key element. Got it? Phospholipid it is a key element in the structure of the plasma membrane. Plasma membrane के structure में phospholipid it is a key element. So ये जो bilayer है phospholipid की, या उसमें बाहर की लेयर हम बोलेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर, दिस विल बी द इंट्रा सेल्यूलर, जो कि सेल के अंदर की साइड में जो रहेगी, दिस विल बी इंट्रा सेल्यूलर एंड दिस इज द एक्स्ट्रा सेल्यूलर। सिंगर एंड निकोलसन स्टूडेंट्स, यस, अकॉर्डिंग टू सिंगर एंड निकोलसन, इन्होंने एक मॉडल दिया था जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या बोलते हैं? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये मॉडल के हिसाब से उन्होंने क्या बताया था, दैट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज हैविंग फॉस्फोलिपिड बायलेयर। ये जो फॉस्फोलिपिड बायलेयर है ये किसने बताया था? इट इज थ्रू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ओनली, यस। और ये फॉस्फोलिपिड बायलेयर में क्या चीज रहती है? उसमें रहेंगे दो प्रकार के प्रोटीन्स, वन विल बी इंट्रिंसिक प्रोटीन and another is extrinsic protein. Got it? Intrinsic protein जो रहेगा it is going to cover the lipid bilayer, और जो extrinsic protein रहते हैं वो कहाँ रहेंगे? They will be present on the layers. Yes, it is present on outer और इनर सरफेस। अंदर के सरफेस में आप देख सकते हो या फिर बाहर के सरफेस में आपको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन दिखेंगे और इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या करेगा? इट कवर्स द लिपिड बायलेयर। इस तरह से आपको दो प्रकार के प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलेंगे। ओके, अब ये जो फॉस्फोलिपिड लेयर है आप उसमें देख सकते हो, ये जो पार्ट है लंबा सा, इसको हम बोलते हैं टेल। सो टेल हमेशा हाइड्रोफोबिक रहेगी और दिस विल बी द हाइड्रोफिलिक हेड। ओके, हाइड्रोफोबिक मीन्स विच हैज द फोबिया फ्रॉम द वाटर, पानी से दूर जाने वाली, या हाइड्रोफिलिक that will it loves the water. In that way you should remember. I hope this is clear. So two types of proteins are present called as intrinsic as well as extrinsic protein. Now the proteins का काम क्या है? proteins membrane में क्या करती है? protein serves as an enzymes. काफ़ी enzymes जो रहते हैं they are proteinaceous, so they serves as enzymes. Proteins are also responsible for transportation. कुछ जो ट्रांसपोर्टर्स है, important transporters, they are also protein in nature. There are some pumps, yes, the pumps which are present for the exchange of the ions and like that, they are also proteinaceous, protein in nature. कुछ रिसेप्टर प्रोटीन्स रहते हैं, सो ये सारी चीज़ के लिए प्रोटीन्स काम आते हैं. सो फॉर दिस और द प्रोटीन्स आर सर्विंग ऑल दिस डिफरेंट फंक्शंस which are present on the plasma membrane. Yes, got it students? Now again there could be a thing in your mind ki chalo ma'am, you told that the hydrophobic molecules can enter, it is they are selectively permeable and all, but how this exchange, yeah, or how this entry and exit of a substance takes place within or from in the plasma membrane, किस तरह से अंदर जाएगी और किस तरह से बाहर आता है,
क्या कोई मैकेनिज्म है या अपने आप ही अंदर चला जाएगा, अपने हिसाब से बाहर आएगा? नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. Yes, this entry and exit of the substances which are allowed there through pass through the plasma membrane, it is due to, I can say, the different activities. Yes, by performing the entry and exit can be by physical activities like diffusion. Yes, physical activities like diffusion, osmosis, and I can say biological activities like what? Like active transport, endocytosis. Yes, ये अलग अलग मैकेनिज्म से आपका एंट्री एंड एग्जिट ऑफ अ सब्सटेंस होता है. सो वी विल डिस्कस अबाउट दैम. अब यदि मैं बात करूँ डिफ्यूजन, जो पहला बताया मैंने डिफ्यूजन. सो दिस डिफ्यूजन इज नथिंग बट व्हाट डिफ्यूज मीन्स मिक्स, एक्चुअली इट इज देयर. यस, बट हाउ इट विल डिफ्यूज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? It is a movement of molecules from a region of higher concentration to the region of lower concentration. Yes, higher concentration से lower concentration की तरफ जब चीज जाएगी, कब तक? Until the equilibrium is achieved. Suppose this is with a higher concentration, this is at a lower concentration. तो यहाँ से यहाँ तक चीज it will flow like this from higher to lower. Okay, till ये अभी बढ़ेगा बढ़ेगा till the equilibrium. That means in both the cases it is same now. That means the equilibrium is achieved. So this diffusion will occur from a higher concentration region to a region of lower concentration until equilibrium is achieved. तो ये diffusion होता है. Very good example we can take it for the gases. Yes, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, रेस्पिरेटरी गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कुछ आयंस रहते हैं, या ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव होंगे. यस, दे कैन क्रॉस इट बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज डिफ्यूजन. या ये सारे substances are very small in size. They are very small in their size, and because they are very small, they can diffuse easily through the phospholipid layer of a plasma membrane. Phospholipid layer जो रहेगी उसमें से वो easily pass हो सकते हैं, क्योंकि एक तो उनकी size भी बहुत कम होती है. Got it? So this is what can we say as a diffusion. Here in the figure you can say, आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया कि ये आपका सेल है, isn't it? This is the cell interior and this is the exterior environment. अब यहाँ पर जो भी सपोज ये मॉलिक्यूल को अंदर लेकर जाना है सेल के, तो ये तभी जाएगा जब बाहर इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा एज कंपेयर टू द कॉन्सेंट्रेशन इन द सेल. Yes, when the outer concentration will be more, then the substance will move from the outside to the inside of a cell, because it is moving from a higher to lower concentration. जब चीज को बाहर निकलना है, जब यही सब्सटेंस को बाहर निकलना है, तो वो कब निकल पाएगा? जब यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा. Yes, so that will come out into the external environment. This is how the diffusion takes place. Clear? Again I can explain you, or we can discuss it like, suppose as I am telling you about the gas. जैसे हम सपोज कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात कर रहे हैं. कार्बन डाइऑक्साइड गैस इट विल बी एक्यूमुलेटेड इन हाई कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड अ सेल. ठीक है, सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया एज कंपेयर टू द आउटसाइड ऑफ द सेल. कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह से क्या होता है, उसका काम तो हमारे सेल को नहीं होता है. इट इज नथिंग बट अ सेल्यूलर वेस्ट. सेल का वेस्ट है, तो हमको उसको बाहर निकालना है. वी हैव टू टेक इट आउट फ्रॉम द सेल. सो नाउ वी हैव, व्हेन इट विल गो आउट, वो बाहर कब जाएगा? जब उसका कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल इट विल बी मोर
as compared to the concentration of carbon dioxide outside the cell. Yes, so in external environment of the cell, carbon dioxide concentration is less as compared to the internal of a cell. Thus, at this time, yes, due to the concentration difference inside and outside the cell, the carbon dioxide moves out from the cell. That is, it is moving from a higher concentration region to a lower concentration region. कब तक बाहर निकलता रहेगा? जब तक कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन इन और आउट ऑफ द सेल में सेम नहीं हो जाता. Got it? So this is how the diffusion takes place. Same thing happens if I talk about the oxygen. The oxygen gas has to taken in because oxygen is needed for the respiration and for many different processes also. इसीलिए सेल के अंदर ऑक्सीजन नीड करेगा. तो कब अंदर जाएगा? जब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू सेल के अंदर, तो वो ऑक्सीजन सेल के बाहर से अंदर की तरफ आएगा. दैट इज इट इज मूविंग फ्रॉम अ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन. Yeah, so this is what we call it as a diffusion there. After that, similar to the diffusion, one more activity is there, physical activity, which is called as osmosis. इस diffusion के ही mechanism को follow करेगा. Yes, we can say that this water follows the law of diffusion. I can write here, water follows the law of diffusion. How? Because what is osmosis there? The movement of water molecules, yes, from a region of higher water concentration through a selectively permeable membrane to a region of lower water concentration. तो यहाँ पे हम specifically water की बात कर रहे हैं. Diffusion में it was not like that. It could be liquid, it could be gas, anything. But osmosis I am talking about the water there. Yeah, so region of a higher water concentration, या फिर हम इसको दूसरी लैंग्वेज में ये भी लिख सकते हैं कि the net diffusion of water across the selectively permeable membrane towards the higher solute concentration. Remember what I am saying. Higher solute concentration. Solute concentration means जहाँ पर solute का concentration ज़्यादा है, यानी water का concentration कम है. Yeah, so it is also it can be also written as, don't be confused with that, from a region of higher from a region of lower solute concentration. Can we say like that? To region of higher solute concentration. देखो अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है. आप बोलोगे मैडम आप बोल रहे हो हायर से लोअर, तो यहाँ तो आपने लोअर से हायर बोल दिया. बट व्हाट इज लोअर? लोअर solute concentration. If it is lower solute, that means higher solvent concentration. और solvent यहाँ पर water है. So you can write in this way also, or if the statement is given, यदि solute concentration की बात हो रही है तो it is lower to higher. If water concentration की बात हो रही है, so it is higher to lower. Remember this thing. So don't be confused on that. ठीक है? So this is what we can say is the osmosis. अब osmosis को समझने के लिए यदि हम देखेंगे कि cells में osmosis कैसे होता है. Suppose we take any of the cells, या तो आप प्लांट से ले लो या फिर एनिमल से ले लो, कोई भी सेल लिया, एंड इफ वी हैव केप्ट दैट सेल इन शुगर वाटर और सॉल्ट वाटर, ये सोल्यूशन विच इज प्रिपेयर्ड बाय शुगर और सॉल्ट इन अ वाटर. ठीक है, हमने उसको सेल को उसमें क्या कर दिया, वी हैव पुट दैट सेल. क्लियर? सोल्यूट क्या है इसमें? या तो शुगर रहेगा या फिर सॉल्ट रहेगा, जो भी आपका आप सोल्यूशन लोगे, इट विल डिपेंड ऑन दैट. नाउ
अब देखोगे what you will see, you can see three observation. The observation, if suppose I am talking about here, what can you see there? आप क्या देख सकते हो? The hypertonic solution यहाँ पे दिख रहा है, hypotonic solution and isotonic solution. So what can you see? Hypertonic solution. That means the cell shrinks and wrinkles. Why? Because it is a hypertonic. What do you mean by now hypertonic? If I talk about the outside medium, या hypertonic की बात जब कर रहे हैं हम, you think about the outside medium. बाहर के मीडियम में क्या रहेगा? It will be, outside medium will be concentrated. If I am saying ये concentrated है, that means the solute concentration is more and the solvent is less. That means water is less. Yes, सेल के अंदर में वाटर ज्यादा रहेगा, तो वाटर की मूवमेंट कैसे होगी? द ऑस्मोसिस, बिकॉज ऑफ द ऑस्मोसिस the water from inside the cell will come out the cell. सेल के बाहर आएगा because it is moving from a higher concentration of water to lower concentration of water. Yeah? Yes or no? Yes. तो इसको हम, इसके कारण क्या होगा? सेल का जो वाटर है वो सारा बाहर निकल जाएगा, तो सेल क्या हो जाएगा? सेल विल श्रिंक और उसमें रिंकल्स आ जाएगी. यस, आवर स्किन व्हेन लूजेस द मॉइस्चर, डिहाइड्रेशन हो जाता है तो क्या हो जाता है? रिंकल्स आ जाते हैं. यस, लूज हो जाती है. व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस लॉस ऑफ वाटर. द सेम थिंग हैपेंस विद द सेल देयर. Got it? So hypertonic, if a cell is placed in a hypertonic solution, now what is hypertonic? Again I am saying hypertonic. Tonic, tone is more. That means it is a concentrated medium. We are talking about the outside medium. ठीक है. Now if I talk about hypotonic solution, hypotonic यानी outside medium जो रहेगा वो dilute रहेगा. Dilute means it is having more water concentration as compared to the inside of the cell. तो ये वाले केस में क्या हो गया? बाहर पानी ज़्यादा है. That's why the water will now, if the cell is placed here, the water from the outside medium, it will enter inside the cell because it will move from a higher water concentration to lower water concentration. अब जब सेल में बहुत सारा पानी भर जाएगा तो सेल क्या करेगा? फूल जाएगा. यस, सो सेल विल स्वेल. और यदि बहुत ज़्यादा फूलता गया क्या होगा? इट इज पॉसिबल दैट द सेल कैन बर्स्ट ऑल्सो, फूट जाएगा. जनरली इट डजंट हैपेंस बिकॉज इन आवर बॉडी all the things is there that there will be a balance is maintained. But yes, यदि हम उसको, if we continuously supply more water and water, it will be go by the osmosis, the cell can burst also. Got it, students? So this happens when the cell is placed in a hypotonic solution. Now what is isotonic? Iso means same. यानी जो medium रहेगा, medium surrounding the cell and the inside the cell, it is having the same water concentration. अंदर जितना पानी का कॉन्सेंट्रेशन है उतना ही कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर रहेगा. सो दिस इज इक्वल. दोनों में सेम है. यदि दोनों में सेम है, इक्वल है, तो कहीं पे भी हायर नहीं है, कहीं पे भी लोअर नहीं है, तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा. देयर विल बी नो श्रिंकेज, देयर विल बी नो स्वेलिंग अप. या सो द फंक्शनिंग सेल ऑफ अ नॉर्मल साइज, द सेल विल बी ऑफ अ नॉर्मल साइज. ऐसे सोल्यूशन को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन. ठीक है. नाउ देयर कैन बी वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू क्लियर यू. यहाँ पर जो मैंने बोला कि मूवमेंट ऑफ सेल हाइपोटोनिक सोल्यूशन में हमेशा वाटर बाहर ही जाएगा. एक्चुअली ऐसा नहीं रहता है कि हमेशा सिर्फ बाहर ही जाता है. जब भी वाटर बाहर जा रहा है ना, या द मूवमेंट ऑफ द वाटर विल बी फ्रॉम द बोथ डायरेक्शन ऑल्सो.
थोड़ा थोड़ा पानी कभी कभी अंदर भी आएगा जब ये पानी बाहर जा रहा है, बिकॉज द मेम्ब्रेन, द सेल मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू वाटर ना, क्लियर है। लेकिन जितना पानी बाहर जा रहा है ना, उसके कंपैरिजन में जो पानी अंदर आ रहा है, इट विल बी वेरी लेस और नेग्लिजिबल। सो वी ऑलवेज कंसीडर दिस थिंग, कमिंग, गोइंग आउट एंड कमिंग इन। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे। So this is what we called as a 2-3 types of solution when a cell is placed in a solution, I can say, plant cell or an animal cell. तो तीन तरह के solution कौन से बन रहे हैं? One is hypertonic, another is hypertonic, and third is isotonic. If it is placed in a hypertonic solution, the cell shrinks. If it is placed in a hypotonic, the cell swells, and if it is an isotonic, there is no change in the cell size. You can perform some activities like it is given in your book also, like आप कुछ activities घर पे भी perform कर सकते हो। जैसे suppose you take the raisins पता है ना, किशमिश रहती है, so you can put the dried raisins or the apricots in water, pure water में उसको dry करके रख दो कुछ समय के लिए, then place them into a concentrated solution of sugar। पहले तो water में डाल दिया आपने, ठीक है, उसके बाद उसको कहाँ, उसमें क्या करोगे, उसको कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ शुगर सोल्यूशन में उसको ऐड करोगे, शुगर या सॉल्ट सोल्यूशन में। और कॉन्सेंट्रेटेड मीन्स जिसमें सल्यूट का अमाउंट ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू द वाटर। सो व्हाट विल यू सी, जो एक्सटर्नल मीडियम है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, दैट मीन्स इज इट अ हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक? इट इज हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक है यानी बाहर के मीडियम में पानी कम है, और जब हमने ये रेजिन्स को, ड्राइड रेजिन्स को, व्हेन वी हैव केप्ट इट इन द वाटर, बिकॉज द आउटसाइड मीडियम वाज वाटर एंड इट वाज ड्राइड, द रेजिन वाज ड्राइड यानी अंदर पानी नहीं था, तो बाहर का पानी सेल के अंदर जाएगा, रेजिन के अंदर जाएगा, तो रेजिन विल स्वेल। या नाउ दिस स्वेल्ड और द स्वोलन रेजिन इज डिप्ड इनटू द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है, बाहर पानी कम है, तो पानी जो रेजिन के अंदर था उसने जो एब्जॉर्ब किया था, वो स्वेल होके बैठा था, दैट वाटर विल नाउ कम आउट, isn't it? So each gains water and swells when it is put in the water solution. Got it? But when these swollen resins are placed in concentrated solution, each one of them it will lose the water and again it will shrink. तो जब वाटर गेन करेगा उसको हम बोल देंगे एंडोस्मोसिस, जब वो श्रिंक करेगा हम उसको बोलते हैं एक्सोस्मोसिस। क्लियर? इसी तरह से इफ यू हैव सीन द फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स, many some plant cells also, they also gain the water through the osmosis only. जो roots absorb करता है ना water from the soil, it is then through this osmosis only. I hope this is clear. One more activity is given in your book about the egg. Yeah, if you take some, for example, hen's egg, you have to remove the shell of the egg by putting the egg in a dilute hydrochloric acid. उसमें डालोगे तो उसका जो बाहर का सेल है ना वो निकल जाएगा। Okay. Now the shell of an egg is made up of mainly what, किससे बना होता है? वो बनता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट से, ठीक है। तो जब ये निकल जाएगा तो थिक आउटर स्किन, जिसको हम शेल से मेम्ब्रेन बोलेंगे, वो रहेगा उसके एग के बाहर। अब ये एग को हम लोग कहाँ डालेंगे? वी विल पुट इट इनटू द प्योर वाटर फॉर सम मिनट्स, which again if we keep it in the water, the egg will swell, isn't it, by the osmosis. Now this same egg, if we keep into the concentrated salt solution, again for some time, what will happen? Again the solution is concentrated and the egg was swelled up, so the water from this egg, it will come out into the solution. Yeah, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे भी? सबसे पहले जो बताया, it will be your endosmosis, and when the water comes out, that is called as exosmosis. So I hope this is clear what is an osmosis
and what are the three types or what are the three results that we see when a cell is placed in a concentrated or the dilute solution. Okay, so the difference between the diffusion and osmosis, if someone asks you, you can say that the diffusion can occur in any medium, but the osmosis specifically it occurs in liquid medium. Isn't it? Diffusing molecules, it could be solid, it could be liquid, or it could be gases. But when I am talking about osmosis, it is a movement of solvent molecules, students, only. Yeah. For osmosis, semi-permeable membrane is always required. Diffusion, no need of semi-permeable membrane always. Without that also the diffusion can take place. Clear? So these are the some points. You can also take some more difference point about between the osmosis and diffusion, but I have given you some basic difference points. Okay. Now after that, if we move, we can see this was about the osmosis and diffusion. इसके अलावा यदि मुझे देखना है कि किस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वेरी सॉरी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में how the things are coming in and going out. So we have seen the two. We have seen what is diffusion and what is osmosis. So diffusion से gases अंदर आ रहे हैं, osmosis से mostly the water and the other things can come, isn't it? Now if I talk about the nutrients, सेल के अंदर nutrients भी जाने चाहिए. Yes, nutrients like sugar, then amino acids which are going to give you the ये जो प्रोटीन से बनेंगे, isn't it? Amino acids and some another important substances has to go inside the cell. Yes, and some waste has to come out of the cell. ये goes in the cell. How they can go there? They can go by some transport system. Yes, कोई स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम से ये अंदर बाहर कर सकते हैं, एंड दिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम विच रिक्वायर्स एनर्जी. Energy can be in the form of ATP or like that also. Got it? तो ये हो गया by through the transportation. Then fourth one I can say the flexibility of cell membrane also makes the cell to engulf in the food. Food is engulfed. जैसे अमीबा में होता है ना, अमीबा किस तरह से with the help of pseudopodia it will engulf the food. Similarly, if this cell membrane many times it can engulf the food and other materials from the environment, और जब इसको engulf करेगा, that process we call it as endocytosis. Suppose this is the cell ना, so it can happen that the cell can become in this way, ये इस तरह से ऐसा अंदर हो जाएगा if the food is there, and it can take the food inside in this way. So it is engulfing that. So this is called as what? Endocytosis. So these are other two processes other than the diffusion and osmosis. That means transportation, yes, which requires energy, as well as the endocytosis. That also is done by the plasma membrane to bring the important substance or selected substance in and out of the cells. After that, as I told you, this was about the plasma membrane, students. Okay, so plasma membrane का function भी यदि आपको देखना है तो you can easily say that the plasma membrane function क्या होता है? Main thing that it is allowing the things to important materials, exchange of important materials it is taking, and again it is an outermost membrane, so it is protecting the cell from the outside environment. Yeah, these can be the functions of the plasma membrane. इसके बाद में जैसे कि मैंने बताया कि the plant cell have this specific extra membrane which is called as a cell wall. Cell wall कहाँ पर है? वो सिर्फ plant cell में present है. ये प्लांट सेल का बाहर का पार्ट बन जाएगा, तो प्लांट सेल में आप बोल सकते हो जो बाहर रहेगा इट विल बी सेल वॉल एंड इनर पार्ट विल बी सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, बट रिमेंबर दिस सेल वॉल इज नॉन लिविंग.
as cell membrane or plasma membrane is living, but cell wall is non-living part of a cell. It is mainly made up of cellulose. Plasma membrane हमने क्या बताया, made up of phospholipids mainly, then proteins, carbohydrates are also there, but the cell wall is mainly made up of cellulose. Yes. Now cell wall is again rigid, वो बहुत rigid रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर रहेगा. तो सेल वॉल का काम क्या है, वो सेल को शेप प्रोवाइड करता है और उसके साथ साथ रिजिडिटी प्रोवाइड करता है. गॉट इट? यस. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल. मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, दैट मीन्स व्हाट इट विल डू, that means it allows the cells of plants, fungi, bacteria to withstand the dilute external media. That means जैसे कि suppose water enters the cell, पानी जब सेल के अंदर जाता है, we know that the cell will swell up, isn't it? When water is entering the cell, because of the osmosis, now this cell swells up, बड़ा हो जाएगा. Yes, जब cell swell होगा, so it will develop pressure. Yes, it will build the pressure against the cell wall. Cell wall के against वो pressure develop करेगा, क्योंकि अंदर से ये भरा हुआ है. तो ये pressure के कारण क्या हो सकता है, ये सेल फूट सकता है. द सेल कैन बर्स्ट, या इसीलिए वो बर्स्ट ना होना चाहिए, इसीलिए जो ये सेल वॉल है ना, ये वैसा ही उल्टा प्रेशर इसके ऊपर एक्सर्ट करेगी. Got it? The wall exerts an equal pressure against the swollen cell. तो अंदर से प्रेशर जा रहा है और वो वॉल भी प्रेशर कर रही है. तो इसके कारण क्या होगा, दिस सेल, बिकॉज ऑफ दिस नाउ द सेल कैन विथस्टैंड द इंटरनल प्रेशर. यदि बाहर से प्रेशर नहीं आता, सिर्फ अंदर से आता, तो इट इज पॉसिबल दैट द सेल कैन बर्स्ट आउट. बट टू विथस्टैंड, what happens when the pressure is from the outside towards the from the inside towards the outside, the same equal pressure is given by the cell wall towards the internal cell pressure. Got it? That's why we can say that it provides the mechanical support to the cell. Now cell wall freely permeable as students to the water and the other substances in the solutions. Clear? Why there is a need of this cell wall? Cell wall की ज़रूरत क्यों है plant cell में? क्योंकि we know that the plant has to be fixed at one place. It cannot move, ना? So उसको extra protection की need है. The cells of the plants need extra protection because there are so many external factors like strong winds, storms, heavy rain can be there, isn't it? Many things are there which that plant has to face, isn't it? The attack of the insects can be there, many things are there, and the plants cannot move its position. That's why an extra protective covering is given to the plant cell, that is nothing but the cell wall. Got it? So this was about the outermost cover or outermost layer of the plant of the cell, that is plasma membrane and cell wall in case of the plant cell. इसके बाद में सेल के अंदर दूसरी और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है जो सभी सेल में रहेगी. इट इज न्यूक्लियस एंड cytoplasm. So about this nucleus and cytoplasm, yes, this we will discuss in our next class. ठीक है? What is the role of nucleus? Yes, cytoplasm क्या है, उसका काम क्या है? So all these things we will discuss in our next class. I hope whatever we have done today, it is understood to you. क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा सेल का स्ट्रक्चर जो है उसमें 3 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट कौन कौन से हैं. उसमें से जो पहला था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वी हैव स्टडीड अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन डिटेल, that it is a living membrane, it is made up of phospholipid. Yes, bilayer, it is
There are two types of proteins which are present, which are called as intrinsic and extrinsic proteins. What is the function of this plasma membrane, how it is selectively permeable, yeah, how the substance can move in and out of the cells, like by diffusion, osmosis, what is the last one, endocytosis, as well as due to the transporters. Yeah, also we have seen what is the cell wall, why the plant cell also have an extra layer, that is the cell wall apart from the plasma membrane. Got it? So this was about the plasma membrane or the cell wall. In the next class we will discuss about the nucleus and the cytoplasm. So I hope you liked the class, students, you enjoyed it. आपको कुछ doubt होगा तो please you can ask me anytime. Yeah, till the next class. Thank you, students. See you all. Till then, bye bye, take care, keep learning, all the very best for your studies. And yes, please like the video, and if you have not subscribed, you can subscribe the channel and also share it with your friends. Okay, I'm giving you the link of the app also, which we have, the Arth Academy app. You can download our app also. This link you will get in the description box as well. Okay, so till then, students, we meet in the next class. Bye bye, take care, bye.